Hello and welcome. You're watching the Thursday edition of This is Exclusive with me, Shavan Sen. We all knew all this while who was behind the Kokernag encounter. Pakistan link was always spoken about. But tonight of this edition of This is Exclusive, we'll get you that evidence. The Pakistani hand has been exposed once again, and that big interview coming in from Jammu and Kashmir. All this and much more in this edition of This is Exclusive. But up first, these are the headlines we're tracking for you at this hour. Pakistan linked to Kokernag encounter now exposed. Lashkar commander claims responsibility on terror tape. Congress legislator Sukhpal Khera arrested by Bhagwat Man's cops in a drugs case, sent to 2-day police custody. All-out war breaks out within I.N.D.I.A alliance. Congress alleges vendetta politics by Aam Aadmi Party government. Yogi's crackdown on mafia continues. Key Atiq Ahmed aide now placed under arrest. India demands justice for Ujjain barbarity survivor. Prime accused arrested. Probe underway. Trinamool Congress leader and Mamata's nephew Abhishek Banerjee summoned by the Enforcement Directorate, asked to appear on 3rd of October. BJP office torched in Tobal. Showdown in Imphal. Situation continues to remain tense in Manipur. Ladies and gentlemen, on 15th of September, 3 officers were killed in action in the Kokernag encounter. The operation continued for several days and finally 3 terrorists were gunned down in the encounter. However, today, Republic gets you the proof of Pakistan's involvement in the Kokernag encounter, the terror confession that no channel has been able to access. The confession of Lashkar-e-Toiba's involvement has been made on a tape by Lashkar commander on 25th of September, where he has categorically admitted that it was them who were responsible for the Kokernag encounter, in which 3 of our Jawans, officers, were killed in action. Republic believes in not giving a platform to terrorists, and hence we are not going to play out the terror tape on air. However, this confession has been made one thing absolutely crystal clear, that Pakistan has time and again sponsored terrorism against India and have been accountable for the terror attacks that have been carried out on Indian soil. The question is, can the Pakistan backers unsee this truth? The truth that Pakistan has repeatedly pushed terror plots against India. In fact, Jammu and Kashmir DGP has also spoken to my colleague Gursimran. And before we play that out, that big interview coming in, let's just quickly take you through some of the details that are now emerging from that Lashkar commander tape that has been accessed. Who exactly is this Lashkar commander that we are talking about? On your screens right now, the picture that you see is of Abu Hamza. Abu Hamza, we are given to understand, has now made a confession in which he essentially talks about the operation that was carried out. Interestingly, what you see in this picture also, we'll put out the other picture. Who exactly is guarding him? Who are those soldiers just next to the Lashkar commander? It happens to be the SSG. The clear Pakistan link has essentially emerged. He makes an admission that it is the jihadis that he had sent across, the mujahids as they say, and more importantly, there was a trap that was laid out. So a clear Pakistani involvement has emerged yet again. In fact, in this interview that was done by my colleague Gursimran, in which the Jammu and Kashmir DGP, he talks about the fact that this Pakistani involvement has also been exposed in inquiry that has been done
by the police. We'll try and play out that interview in a short while from now, but before that, let me quickly go across to my colleague Gursimran to quickly take you through the details of the terror tape that has been accessed by Republic TV, and then we play that big interview that is coming up in a short while from now. Well, in fact, before I go across to my colleague Gursimran, we'll try and play that interview out. The first big confirmation now coming in that it is clear that Pakistan was behind the Kokernag. इस साल में बड़े कामयाब ऑपरेशन दोनों सरहद पे और सरहद के अंदर के इलाकों में हुए हैं और इस साल के ऑपरेशंस की खास बात यह है कि हमने अपनी सिक्योरिटी की ग्रिड जो बॉर्डर के ऊपर तैनात है उसको काफ़ी मजबूत रखा है और इन्फिल्ट्रेशन करते हुए बहुत सारे जो फॉरेन टेररिस्ट जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके हासिल करके आए थे, जिनका ताल्लुक ज़्यादातर लश्कर तौबा के साथ और जैश मोहम्मद के साथ है, उस सरहद के ऊपर मारे गए। उसके अलावा सरहद के अंदर भी काफ़ी मिलिटेंट अभी तक न्यूट्रलाइज हुए हैं। 47 के करीब तादाद इस की रही, क्योंकि गिनती अब धीरे धीरे इनकी कम पड़ती जा रही, इनको ढूंढ के पीछा करके ऑपरेशंस को चलाना पड़ता है। हमारे काफ़ी कामयाब ऑपरेशन इस वक्त हुए हैं और उनको और आगे बढ़ाने के लिए इस वक्त कार्रवाई हमारी बराबर जारी है। सरहद की जो दृष्टि से, सिक्योरिटी की दृष्टि से अगर देखें तो 36 के करीब लोगों का सरहद पे मारा जाना, मुझे लगता है कि शायद फिगर अभी उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है और इसका मतलब कि जो सुरक्षा की ग्रिड इस वक्त बॉर्डर पे काम करती है वो भी ज़्यादा चौकस है और ज़्यादा कामयाबी उनको हासिल हुई है। सर, नंबर्स कुछ बता पाएंगे कि हिंटरलैंड में कितने आतंकी एक्टिव हैं और लॉन्च पैड्स पे क्या इनकी तादाद है, क्योंकि लगातार इंटेलिजेंसी से इनपुट्स आते हैं? देखिए, पहली बार है कि जो एक्टिव टेररिस्ट हैं उनकी तादाद डबल डिजिट के अंदर इस वक्त चल रही है, जबकि किसी ज़माने में ये तादाद सैकड़ों में होती थी, अब ये डबल डिजिट के अंदर आ गई है, 100 से नीचे चल रही है। इनके जितने भी लिस्टेड मिलिटेंट हैं उनको जल्द और जल्द आइडेंटिफाई करने के लिए, लोकेट करने के लिए कार्रवाई जारी है। एफटी की तादाद अभी भी ठीक ठाक है, बहुत बड़ी नहीं, मगर फिर भी तादाद ठीक ठाक अभी मौजूद है। आजकल जहां लोकल टेररिस्ट मारा जाता है उसके साथ कहीं एफटी भी साथ में चलता है, लोकल की सपोर्ट से ही एफटी चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम वाले 2-4 महीने में उनके ऊपर फोकस करेंगे। और सरहद पार की अगर बात करें तो बहुत सारे लॉन्चिंग पैड अभी भी एक्टिव हैं। गिनती तो एग्जैक्ट हम लोग अपने इंटरनल डिस्कशंस में उनका जिक्र करते रहते हैं, मगर जिस तरह का बिल्टअप, जिस तरह की एक्टिविटी सरहद पार लॉन्चिंग पैड्स के ऊपर जारी है, उससे ये लगता है कि उनकी तादाद कुछ एक जो है उन लॉन्चिंग पैड्स के ऊपर मौजूद है। अब एग्जैक्ट कितने हैं कितने नहीं हैं वो कहना इस वक्त मुश्किल है, मगर अगर आप मान लीजिए कि 36 लोग सरहद से इन्फिल्ट्रेट करते मारे गए तो जाहिर है कि आगे लॉन्चिंग पैड्स के ऊपर और भी इस तरह के लोग जो उन्होंने कैम रखे हुए हैं, आने वाले टाइम में भी उनकी साजिश को नाकाम किया जाएगा। पाकिस्तान हर बार जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से शेड ऑफ करता है, लेकिन रियासी एनकाउंटर में ही जो आतंकी शकील जानबाज मारा गया उसको लेकर पाकिस्तान में जो है ख्याज अकीदत होती है। वहाँ पर आतंकी आते हैं और ये कहते हैं कि हमने जो है कोकरनाग का एनकाउंटर भी किया था, हमारे जो आतंकी थे शामिल थे। किस तरह से देखते हैं लश्कर के टॉप कमांडर्स का ये मानना, उस सभा में जो वीडियो भी सामने आया? देखिए, पाकिस्तान दुनिया को अब ये बताने में फेल हो गया है कि उसका जहाँ की मिलिटेंसी या पंजाब की मिलिटेंसी में हाथ नहीं है और बिल्कुल नंगा हो गया, बेनकाब हो चुका है। मैंने कल भी जिक्र किया था कि चाहे पंजाब की दहशतगर्दी हो चाहे जम्मू कश्मीर की दहशतगर्दी हो, दोनों की जननी, दोनों की माँ एक है और वो माँ पाकिस्तान है। पाकिस्तान की एजेंसी ISI है। दोनों तरफ से जो कार्रवाई उधर से चल रही है उसके चलते हम लोग पंजाब में जो इक्का दुक्का एलिमेंट इनके फिर से पैदा होते हैं, पंजाब पुलिस को उसको डील करती है। जहाँ पर जो हमारा मिलिटेंसी का लश्कर और जैश का ज़्यादा रहता है, कुछ एक हिजबुल मुजाहिदीन के एलिमेंट भी अवेलेबल हैं। इनके हेडक्वार्टर पाकिस्तान में हैं, इनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में होती है, इनके जो मेजर लीडर हैं वो पाकिस्तान में बैठे हैं और जब कोई दहशतगर्द मारा गया है इनको खराजे कीमत भी आजकल पाकिस्तान में ही दिया जाता है, ट्रिब्यूट भी पाकिस्तान में दी जाती है। ऐसे क्लेम करते हुए मुझे लगता है कि बेशर्मी का ही एक सबूत है जब आदमी ये कहे कि वो दहशतगर्दी में जहां शामिल नहीं है और उन्हीं की जगह से बैठ कर के उनको खराजे कीमत और उनको ट्रिब्यूट्स दी जाएं। मुझे लगता है कि शर्म की बात है। और वहाँ पर अगर देखें, आज TRF कहे या इनका कश्मीर न्यूज़ सर्विस वहाँ की कहें जो चलती है,
ये सारे के सारे लगभग पाकिस्तान की एजेंसियों के ऑफिशियल माउथपीस बन गए हैं। और जहां पर जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कोई गाड़ी का टायर भी फट जाए तो क्लेम करने के लिए वहां से टीआरएफ इन्होंने रखे हुए हैं। आजकल ये दहशतगर्दी आईएसआई के अपने दफ्तरों में बैठ के वहां से कंट्रोल होती, वहां से चलती है। ये जो मीडिया के क्लेम और जो बाकी चीज़ें होती वो भी वहां पर बैठ के फैब्रिकेट होती हैं। हम लोग यहाँ पर इसका सख्त नोटिस ले रहे हैं। जहाँ के गद्दार जो वहाँ पर दहशतगर्दी तंजीमों में बैठ करके काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी सख्त नकेल कसी गई है, चाहे वो डोडा का एरिया हो। 119 के करीब ऐसे लोग जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया। ओवरऑल जम्मू कश्मीर के अंदर 400 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो जहाँ के गद्दार वहाँ पर पाकिस्तान की दहशतगर्दी तंजीमों में बैठ के बतौर हैंडलर्स या बतौर सपोर्टर्स काम करते हैं, उनकी निशानदेही भी हो चुकी है। बहुत सारे लोगों के ऊपर यहाँ पर्चे पुराने भी दर्ज हैं, नए पर्चे भी उनकी कार्रवाइयों के मुताबिक दर्ज किए जा रहे हैं। और उनके खिलाफ जैसे जो नमाजें गायबाना पढ़ते हैं, यहाँ पर चलान भी गायबाना तौर पे होंगे, मगर इनकी जो जहाँ पर प्रॉपर्टीज़ और इनके जो जहाँ पर समर्थक हैं उनके खिलाफ नकेल और ज़्यादा टाइट की जाएगी। सर, आपने कहा डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है। 4 टेलीग्राम चैनल जो हैं टीआरएफ और उनके सिस्टर एजेंसीज के जम्मू सरकार की तरफ से बंद करवाए गए हैं। क्या इसी तरह का क्रैकडाउन रहेगा जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है आतंकी संगठनों द्वारा? ठीक, इस तरह का क्रैकडाउन जारी रहेगा। अब जहां पर अनफॉर्चुनेटली कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाए, कल हमारा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रामबन में गाड़ी में एक्सीडेंट में हमारे जवान कुछ मारे गए। वो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर रहे थे। उसको भी अब टीआरएफ पाकिस्तान में बैठ करके कहेगी कि ये वो एक्सीडेंट हमने करवा दिया है। तो मुझे लगता है कि कल को अगर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, जलजला आ गया, फ्लड्स आ गए, तो टीआरएफ उसका क्लेम ना करें कि पाकिस्तान में जलजला भी उन्होंने ही लाया है। सर, आखिरी सवाल है सर, एक बहुत बड़ी थ्रेट के तौर पर जो है खालिस्तानी रेडिकल्स उभर कर आ रहे हैं। यहाँ अगर बात की जाए, रंजीत नीटा अब अक्रॉस एक्टिव है, उसके खिलाफ आप जो है एनआईए के सहयोग से कार्रवाई भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो सर कहीं अगर सिमरिंग वेव ना हो, उससे निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस किस तरह से जो है एक्शन इनिशिएट कर रही है? देखिए, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जहाँ का सिख समुदाय बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को कंडक्ट करता है। जहाँ पर किसी ज़माने में जब पंजाब में दहशतगर्दी चलती थी, छुटपुट तरह की इन्वॉल्वमेंट जहाँ भी कुछ इलाकों की थी और उस वक़्त कुछ सख्ती भी करनी पड़ी और कुछ लोगों को तकलीफ़ भी पहुँची उसकी। मगर मुझे लगता है कि आज की तारीख में कुछ एक ऐसे लोग हैं जिसको मैंने कहा कि गद्दारों की लिस्ट में शामिल हैं, पार बैठे, नीटा भी उनमें से एक है। वो कभी कोशिश करता है कि पाकिस्तान से बैठ कर के जहाँ और पंजाब की दोनों की मिलिटेंसी के तार आपस में जोड़ने की कोशिश करे। पीछे एक खेप हथियारों की उसकी तरफ से आई थी जो हम लोगों ने पकड़ी थी। इस तरह की खेप उस तरफ भी पहुँचाने की कोशिशें उसकी रहती हैं। कुछ एक लोग हमने ऐसे पकड़े थे जो उसकी बुनियाद उसकी शय पर जहाँ उसकी सपोर्ट से जहाँ पर ड्रग्स की तस्करी और हथियारों की तस्करी कर रहे थे। मुझे लगता है कि हम लोग इस चीज़ को लेकर सतर्क हैं। उस तरह की जो गतिविधियाँ पार से करते हैं उसका नोटिस लिया जा रहा है और नोटिस लेते रहेंगे। Carrying on some more breaking news, staying with that expose. We spoke about Pakistan's involvement. Ladies and gentlemen, a confirmation now coming in from the pictures that have been accessed. Pakistan's SSG commandos are essentially seen in pictures guarding the LET commander, Abu Hamza, who can be seen in that picture. Jammu and Kashmir DGP Dilbaz Singh speaking to Republic TV, also confirming that there is a clear Pakistani link. In fact, the terrorist was gunned down by the forces. Remember, there was a janaza that was basically done by the Lashkar-e-Toiba, a gathering that actually took place in Pakistan-occupied Kashmir, in which top LET commanders and other members of the terrorist group were present. That is the picture that you see on your screens. And in this very picture itself, you can see Pakistan's trained SSG commandos who are also present. The fact of the matter is this: for the longest time, India has been saying that it is Pakistan who's been harboring terrorists, launch pads that are still brimming with terrorists who have been trained by none other than Pakistani army. A confirmation now coming in through these pictures that have been accessed by Republic TV. Let me quickly go across to my colleague Gursimran, who is getting us the latest details. Gursimran, two important details emerging from the Kokernag encounter. One, with regards to Pakistani hand, which was known all this while, but there is now enough credible evidence that has been gathered. Just why don't you take our viewers through the latest details that you're picking up after speaking to the Jammu and Kashmir police? What is it that they have found so far in the investigation they have done?
See, what they were doing, Shavan, what the terrorists have done in the Kokernag, it was only on the behest and the directions that were given by the Lashkar commanders sitting on the Pakistani soil. And this has become quite evident with the videos that surfaced. And today when we spoke to the DGP, he said that this is the reality, that how Pakistan and the ISI are instrumental in running the factory of the terror in Jammu and Kashmir. And it is the headquarters of the ISI that are now managing the terror outfits, be it Lashkar-e-Toiba, Jaish-e-Mohammed or some instances of Hizbul Mujahideen. Now coming to the SSG commando, so the janaza was of Shakil Janbaz, who is the Pakistani SSG trained terrorist that was killed in Riasi area of Jammu on 4th of September. And then we accessed some of his photographs where he was being trained with the martial art and also with the training of sophisticated weapons. Now during his janaza, not only the top commanders of Lashkar-e-Toiba were seen, that is the funeral in absentia that was being done, but also the regulars and the SSG commandos were seen guarding the top Lashkar commander, which clearly shows that the Pakistan is extending every possible support to the terror groups in the Pakistan and in Pakistan occupied Jammu and Kashmir, not only to give them security but also they are training the Pakistani terrorists so that when they cross over to the Indian side, they are trained in a guerrilla warfare that gives them an edge. Because if you see the history of past 2 years, there have been at least 5 major terror attacks that were done only by the trained Pakistani terrorists that are specially trained for the jungle warfare and having the expertise in the guerrilla warfare. So this is what Pakistan is doing, that they are now sending the SSG trained commandos that are trained with the martial arts, sophisticated weapons and are ready to survive in any condition that arose in the jungle warfare. And that's why they have been managed to carry out 5 major terror attacks, starting from that has happened in the Rajouri, followed by the other one that happened in the Poonch Bhattaduriya, then in the Kandi area of Rajouriya, then again in the Bhattaduriya and then in the forest area of Kulgam. So this has been the history of the Pakistan's terrorists, what they have done in Jammu and Kashmir, and these terrorists are specially trained by the SSG commandos. And now the SSG commandos can be seen in the security of the top Lashkar commander, Abu Hamza codename. Yes. Very much, Gursimran, for getting us the latest details only on Republic TV. Pakistan once again exposed their hand in Kokernag encounter is now out in the open. In fact, Jammu and Kashmir DGP has also spoken for the first time. साहब नाल होया ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਕ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ, किस तरह वेंडेटा पॉलिटिक्स 8 साल पुराना मुकदमे सुखपाल सिंह खैरा नूं इन्वॉल्व करके और बिना किसी गलबात ते बिना किसी तथ्यां ते जेड़ा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने सुखपाल सिंह खैरा दे खिलाफ जेड़ा क्वैश कीता सीगा ਉਹਦੇ खिलाफ सिट बना के उन्हां नूं इन्वॉल्व कर लिया गया। और मैं पहली बारी वेखिया सिट तो बनदियां मैं सुनिया सी, लेकिन पहली बारी मैं देखा बिना कोई सम्मन दित्तियां बिना पूछताछ कीतियां सीधा मुकदमा दर्ज करके ते केवल फड़न वास्ते आए। और नाल ही नाल चंडीगढ़ जिस प्रकार उन्होंने घर गए सुबह, ऐदां लगदा सी कि बहुत वड्डे क्रिमीनल नूं पुलिस फड़न गई होवे किदां। सो घरे गए बिना दसे और बिना इतलाह दित्तिया, कोई वारंट नहीं सीगा, क्योंकि उन्होंने वार-वार आपदे लाइव ते कहा कि भाई कोई थोड़े कोल वारंट है तो मैनूं दसो, कोई अरेस्ट वारंट ना ही कोई चंडीगढ़ की पुलिस का एक भी व्यक्ति उत्थे मौजूद सीगा। सो ये मैं समझदा कि जिवें मुगल राज दे समय हरेक व्यक्ति की आवाज़ दबाउण दा काम हुंदा सी, अज दी सरकार उसे तरह का काम पंजाब दे अंदर कर रही है। और जिस प्रकार रोजाना कदे फलाने नूं फड़ लिया कदे फलाने नूं फड़ लिया, सो जान बुझ के एक डर भै दी राजनीति
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ This is ਅੰਦਰ। a political vendetta ਸੋ ਮੈਂ in ਸਮਝਦਾ Punjab. ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ We ਗੱਲ ਨੂੰ condemn ਚੁੱਪ the ਕਰਕੇ arrest ਨਹੀਂ of ਬੈਠਾਂਗੇ। Sukhpal Singh Khera. ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ We will not ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹ remain ਲੜਾਈ quiet. ਲੜਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ And we ਪਾਰਟੀ ਦੇ will ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰ fight ਨੂੰ against this arrest. ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ If the Congress workers ਕਿ will be ਤੁਸੀਂ harassed ਦੇਖਣ ਚ in the ਬੜੇ same ਨਫੀਸ ਤੇ manner, ਸ਼ਰੀਫ we will ਲੱਗਦੇ not sit ਹੋ quiet. ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ We also want ਮੈਨੂੰ to ਲੱਗਦਾ say ਕਿ the police ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ officers ਕਹਿਣਾ that ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ kindly ਨਹੀਂ ਹੋ do the ਸਕਦਾ job ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ and ਔਰ ਅੱਜ refuse ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ to perform on the ਨਾ political ਕੇਵਲ vendetta. ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ The people not only ਦੁਨੀਆ in ਜਾਣਦੀ Punjab, ਹੈ not only in ਲੋਕ India, ਜਾਣਦੇ but ਨੇ sitting ਕਿ in ਇਹ ਸੱਚ different ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ countries ਵਿੱਚ condemning the arrest of ਕਿਉਂ Sukhpal ਇਹ Singh ਕੀਤਾ Khera. ਗਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਾਕਿਫ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ People ਰਹਾਂ are very much aware ਸੋ that why ਅੱਜ this ਅਸੀਂ has ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ happened ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ and how ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ they have created ਜਾਣੂ this kind ਕਰਾਇਆ of ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ We have ਕਿ ਗਵਰਨਰ detailed ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ entire ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ incident to ਕੌਗਨੀਜੈਂਸ Punjab ਜ਼ਰੂਰ government. ਲੈਣਗੇ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ We are ਕਹੂੰਗਾ very much hopeful ਕਿ that ਉਹ ਵੀ Punjab ਤੁਹਾਨੂੰ government will take the ਇਸ cognizance on this. ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ Today ਇਹ is Bhagat ਜਮਾਤ Singh's ਜਿਹੜੀ birthday. ਹੈ ਫੋਟੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟ ਆਮ ਕੰਮ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ is following the line of ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ What had happened ਇਹ to Sukhpal same Singh Khera? ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ The same 6 ਵਜੇ ਸਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ activities ਖਹਿਰਾ were ਉਹਨਾਂ ਦੇ done ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ by ਨਾਲ ਨੇ ਸਾ the ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ Britishers. ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿ 6:15 ਵਜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਇਨਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟ Khera's ਦਾ ਤਾਲਾ family ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ has ਫਿਰ detailed ਕਿਚਨ ਦਾ the ਦਰਵਾਜ਼ਾ entire ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ episode that how ਫਿਰ the ਧੱਕੇ police ਦੇ have ਨਾਲ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ locked ਇੱਕ the door and put the ਇਲੈਕਟਡ enter ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ in house. ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਰੱਖਦੇ ਕਿਤੇ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ According to the ਕਿਤੇ ਭੱਜੇ protocol, ਨਹੀਂ ਨੇ MLA ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ is in ਚਲੇ the ਜਾਓ position. ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਹੈ ਤੇ ਵਿਖਾਓ ਕਚਹਿਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਇੱਕ There was ਵਿਸ਼ੇਸ਼ no ਗੱਲ arrest ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ warrant ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ shown ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ to the family. ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ And this is ਪੰਜਾਬ what ਦੇ we have ਵਿੱਚ informed to ਸੌਰੀ Punjab ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ government. ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ They supposed to ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, inform the UT DGP ਕੋ ਪੁੱਛ administration as well ਕੇ as ਕਿ police ਪੰਜਾਬ before ਪੁਲਿਸ arresting. ਜਦੋਂ ਸਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਯੂਟੀ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ Have ਕਾਨੂੰਨ the ਇਹ ਹੈ Punjab ਕਿ police ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ informed ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ the ਲੋਕਲ UT police, DGP or SSP regarding the arrest ਵਿਖਾਣੇ in Union Territory? ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੋ ਇਹਦੇ If ਖਿਲਾਫ the local police tell a company kidnapping only, then you can arrest. ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਿੰਜੈਂਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ We want that ਕਿ ਜੇ kidnapping ਉਹਨੇ case ਇਤਲਾਹ to be ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ registered ਜਿਹਦੀ against ਸਾਨੂੰ the ਵੀ police ਪਤਾ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ officers ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ who ਤੇ arrested ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ Sukhpal Singh ਖਹਿਰਾ Khera. ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ And Sukhpal Singh Khera was continuously raised the issue to show the full arrest warrants. ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ We ਸਾਥੀ ਦੇ condemn ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ the ਇੱਕ arrest ਬੜੀ of ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ Sukhpal Singh Khera and we are ਵੀਡੀਓ providing ਇੱਥੇ it ਵਿਖਾਣਾ all ਚਾਹਨਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ backup. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ We ਜਦੋਂ want to ਸਟੇਟ show you a ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ video ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 5 years ago ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ where ਵਿੱਚ Bhagwant Mann ਇਹ in a ਸਫਾਈ similar ਦੇ case ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਈਕ ਹੈ justifying ਕਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਸ ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ Volume ਔਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰ ਖਹਿਰਾ ਵਕਤ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਯਾਰਾ ਸਪੀਕਰ ਆਪ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੋ ਸਰ ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਆਪ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ president of Aam Aadmi ਕੇਸ Party ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ and ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ FIR ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਕਾਇਦਾ And there was no mention of Sukhpal Singh Khera when Sukhpal Singh Khera was in Aam Aadmi Party. 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ And the same chief minister, now he's the chief minister. ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ Bhagwan should understand that ਕਰੇਗੀ he cannot get ਜਿਹੜਾ ਵੀ the voice of the Congress party by arresting their leaders. ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ make our voice strong and tomorrow ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਾਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੁੱਕੀ। ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੇਰਾ In the India Today Best Universities 2023 survey, released recently, India's #1 ranked universities in various streams are JNU Delhi, Amity University, AIMS Delhi, IIT Delhi, and National Law School Bengaluru. 3, 2, 1. We are now called as Republic Kannada here in Karnataka. Republic Kannada has officially launched. Today we dedicate Republic Kannada to the people of Karnataka. Our topmost sources are telling us at Republic that there will be mega action against Khalistani supporters in the next 48 hours. Trudeau continues to look baffled and cornered on the world stage. The Indian agencies have decisively taken the moment to push back Khalistani terror and expose it both within and globally. Breaking coming in. The NIA has raided various locations in Punjab, Haryana and a number of other states on close to 50 locations. We are now called as Republic Kannada here in Karnataka. Republic Kannada has officially launched. Today we dedicate Republic Kannada to the people of Karnataka. Our topmost sources are telling us at Republic that there will be mega action against Khalistani supporters in the next 48 hours. Trudeau continues to look baffled and cornered on the world stage. The Indian agencies have decisively taken the moment to push back Khalistani terror and expose it both within and globally. Breaking coming in. The NIA has raided various locations in Punjab, Haryana and a number of other states on close to 50 locations. We are now called as Republic Kannada here in Karnataka. Republic Kannada has officially launched. Today we dedicate Republic Kannada to the people of Karnataka.
topmost sources are telling us at Republic that there will be mega action against Khalistani supporters in the next 48 hours. Trudeau continues to look baffled and cornered on the world stage. The Indian agencies have decisively taken the moment to push back Khalistani terror and expose it both within and globally. Breaking coming in. The NIA has raided various locations in Punjab, Haryana and a number of other states on close to 50 locations. We are now called as Republic Canada here in Karnataka. Republic Canada has officially launched. Today we dedicate Republic Canada to the people of Karnataka. Our topmost sources are telling us at Republic that there will be mega action against Khalistani supporters in the next 48 hours. Trudeau continues to look baffled and cornered on the world stage. The Indian agencies have decisively taken the moment to push back Khalistani terror and expose it both within and globally. Our topmost sources are telling us at Republic that there will be mega action against Khalistani supporters in the next 48 hours. Trudeau continues to look baffled and cornered on the world stage. The Indian agencies have decisively taken the moment to push back Khalistani terror and expose it both within and globally. Breaking coming in. The NIA has raided various locations in Punjab, Haryana and a number of other states on close to 50 locations. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. A very good evening. You're watching Republic and I'm Deepthi Sachdeva. Let's get you a quick check of the top stories we are tracking at this hour. It is a huge face-off between the Congress and the AAP, and the Congress MLA Sukhpal Singh Khera is arrested by the cops in the state of Punjab. This is about a drug case. He's been sent to 2 days of police custody. An all-out war then breaking out within the INDI alliance. The Congress says this is vendetta, this is badle ki rajniti, but the Aam Aadmi Party says this is only the law taking its own course. In Uttar Pradesh, this is Yogi's crackdown on the mafia that continues. T. Atiq Ahmed is now placed under arrest. India also demanding justice for the Ujjain barbarity survivor. The prime accused has been arrested. A probe now is underway. TMC leader and Mamta's nephew Abhishek Banerjee is summoned by the ED again. He's been asked to appear on October the 3rd. He again says this is political vendetta. First up, let's get you this story coming in from the state of West Bengal, where